In the previous lecture, we discussed some of the mathematical models by using first order differential equations. Today, we are going to discuss a couple of more mathematical models which we can basically use first order differential equations to model those problems. For example, advertising awareness. I think this is, for example, a company, he introduced a new product in a market, and he wants that company want to advertise that product. Let we assume that A of T is the advertising awareness. And Q of T, or Q maybe, Q of T is the advertising activity. Or you can say investment on the advertisement. Okay. The money which they spend on the advertisement of that new product. Investment, or you can say money spent on that advertising activity. Then we can construct a differential equation that is basically that expresses the advertising awareness among the target group of people who you want to who that company want to be aware of that new product. Then we say that the rate of change of that advertising awareness is proportional to proportional means you have to put a constant here, maybe a lambda times A. Now this awareness always decreases in the absence of advertising activity. ठीक है, अगर कंपनी एडवर्टाइज नहीं करेगी उस नए प्रोडक्ट को, तो लोगों की अवेयरनेस जो है वो क्या होगी, कम होगी. So we have to put here a negative sign. So advertising awareness is always basically it is a problem of exponential decay. If there is some advertising activity, okay, for example, you put here a B times Q of P, where B is some constant and lambda is also a constant. Lambda and B, they are constant, okay, where lambda is positive. Lambda should be greater than 0 because you have put here a negative sign. Now this Q of T represents the, it could be money they spend to advertise that new product. So there are two parts in this differential equation. The first part is basically this one, which describes the public awareness will decrease in the absence of this marketing, you can say, activity or advertising activity. This is your advertising activity. This could be some money you spend on advertising. You play the ads on TV, social media, or whatever. And this is the advertising awareness of the people. So this kind of differential equation, yes. सर मैंने पूछना था, ये जो आपने lambda greater than 0 किया, ये minus lambda greater than 0 है, lambda greater than 0 है? It's lambda greater than 0. It is not negative.
It is lambda Thank you. because सर ये आप समझा सकते हैं प्लीज क्यों ग्रेटर देन 0 है? देखें, दिस ए रिप्रेजेंट्स द एडवर्टाइजिंग अवेयरनेस, ठीक है। अगर आप एक प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट को आप रोक देंगे, देर इज नो एक्टिविटी, एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी, ठीक है। अगर बी यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आपके पास ये आपने कोई ऐड नहीं चलाया सोशल मीडिया पे, टीवी पे कोई ऐड नहीं चलाया, जब कोई नई प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो लोगों को तो नहीं पता चलेगा ना कि कोई नई प्रोडक्ट आई है, उस कंपनी ने इंट्रोड्यूस की है, ठीक है। तो अवेयरनेस, दिस ए ऑफ टी is the variable which is dependent on t, that the awareness of the people with the passage of time will decrease, ठीक है। अगर ये डिक्रीज करेगी तो फिर यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल डिके का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यहाँ पे लेमडा तो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव इसके साथ लगा है। अगर लेमडा भी नेगेटिव हो जाता है तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, which means कि in the absence of advertising activity, awareness of the people increase, which is not possible. So you have to put a negative sign before lambda, and lambda should be positive. I hope you get it. Who was asking the question? सर आई वाज सर वन अदर थिंग, आपने कहा था कि अगर क्यू ऑफ टी 0 होगा तो इट विल बी एन एक्सपोनेंशियल डिके प्रॉब्लम। सर अगर वो 0 ना हुआ तो तब भी एक्सपोनेंशियल डिके प्रॉब्लम होगा या नहीं? नहीं, in that case देखिए, अगर यहाँ पे एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल उसने कोई भी नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की है, फॉर एग्जांपल शैम्पू इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो उसने सबसे पहले क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, उसकी ऐड बनाने हैं या पोस्टर्स बनाने हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, उन्होंने वो ऐड चलाना है, टीवी पे ऐड चलाना है, सो दैट द पीपल बिकम अवेयर ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये इन्वेस्टमेंट है उनकी जो एडवर्टाइजमेंट पे वो करेंगे, कंपनी करेगी, ठीक है। ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अवेयरनेस ऑफ द पीपल। जितने ज्यादा ऐड चलेंगे, जितनी जितनी ज्यादा एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी होगी, उतने ज्यादा लोग जो है वो अवेयर होंगे। लेकिन वंस दे स्टॉप एडवर्टाइजिंग दैट प्रोडक्ट, तो लोग जो अवेयरनेस होगी लोगों की वो कम होती जाएगी, डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि लोग जो है कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं, ठीक है। लोगों को आपने, यू हैव टू कीप देम इन्फॉर्म अगेन एंड अगेन कि ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च की है। उससे क्या होगा, अवेयरनेस लोगों की इंक्रीज होगी। जो ही आप स्टॉप कर देंगे अपनी एडवर्टाइजमेंट को टीवी पे या सोशल मीडिया पे, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उस प्रोडक्ट को भूलना शुरू हो जाएंगे। एक टाइम आएगा कि बिल्कुल ही भूल जाएंगे। बहुत सारी ऐसी मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जो पहले बहुत फेमस होती थी, लेकिन अब जो है वो मार्केट में है ही नहीं, लोग उसके बारे में भूल गए, ठीक है। तो लोगों को आपने इन्फॉर्म्ड रखना है कि हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट जो है वो बनाती है, एंड देन दे सेल इट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी कंपनी, जो भी वो प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, we'll discuss this differential equation in more detail. Now, what is this b? b क्या है, अगर, और lambda क्या है, ठीक है। lambda is the rate of forgetting here, ठीक है। यहां पे फॉरगेटिंग रेट है ये लोगों का, ठीक है। और b क्या है, ये अगर मार्केटिंग आपकी एक्टिविटी चल रही है तो ये क्या होगा, ये लोगों का अवेयरनेस रेट होगा, ठीक है। यू कैन से अवेयरनेस रेट होगा। अगर यहाँ पे लेमडा, फॉर एग्जांपल, मैंने आगे एक लेट्स डू दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अगर हमारे पास कोई भी एक कंपनी है जिसने एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की है, एंड लेट मी, हाँ, a management of a company decided to advertise a new product permanently during the year, ठीक है। एक
एक कंपनी ने नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की है और पूरा साल उसकी जो है ना उन्होंने डिसाइड किया है कि पूरा पहला साल जो है वो उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ठीक है। द एडवर्टाइजिंग बजट इज $12,000, ठीक है। एग्जाम्पल, advertising budget is what? It means Q of T is $12,000 per year. Okay. एक कंपनी है जिसने एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की है, दे डिसाइडेड कि पूरा साल आपने इसकी एड चलाने हैं टीवी पे या सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने बजट रखा है उसके लिए $12,000। एंड द कोफिशिएंट्स K and B, फॉर एग्जांपल K इज, सॉरी lambda इज, मैंने नोट्स में K लिखा हुआ है lambda, इसलिए you can take it 1/4 and B is 25, ठीक है। Construct and solve the ODE describing the number of people A of T aware of this product at the end of the year, ठीक है। So we have to find the number of people who would be aware of this product at the end of first year after introducing that product, okay. So what is this? A of T is the number of people or the consumers, people aware of the new product at the end of first year. So we are given this data and we have to find A of T at the end of first year. अब देखिए, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी? dA of T by dt is equal to -1/4 A of T plus B is what? 25. अब देखिए, आपको जो एडवर्टाइजिंग बजट है वो $12,000 पर ईयर गिवन है, ठीक है। लेकिन आप इसको अगर मंथ्स में डिवाइड कर लें तो दैट वुड बी मोर इफेक्टिव, क्योंकि आप ए ऑफ टी पहले मतलब इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने इसको देखना है, तो आप डायरेक्टली एक ईयर के बाद करेंगे तो दिस वुड बी म्यूट ऑन व्हाई, आई होप यू आर लिसनिंग मी, यस, ठीक है। तो हम इसको साल पे नहीं रखते, और ये जो है ये रेट्स जो गिवन है ये पर मंथ है, पर मंथ, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हम इसको भी पर ईयर की जगह इसको हम पर मंथ में कन्वर्ट करते हैं, तो पर मंथ में ये क्या होगा? Q ऑफ T, इसको 12,000 को डिवाइड कर दें 12 पे यार, तो आपके पास पर मंथ आ जाएगा जो भी बजट है एडवर्टाइजिंग का। सो इट इज $1,000 पर मंथ, ठीक है। तो सारे यूनिट्स, टाइम यूनिट्स को आपने सेम करना। So now 25 into the Q of T is what? It is 1,000, ठीक है। अब what does this factor means? कि आपके पास अगर 1,000 इसको आप मल्टीप्लाई करें, you get 25,000, ठीक है। It means अगर आप एक $1,000 स्पेंड करेंगे तो 1,000 into 25,000 people would be aware of that product. Or what does this factor describes us? कि awareness कम होगी किस फैक्टर से? 1/4 से, क्योंकि नेगेटिव है तो अवेयरनेस क्या होगी? डिक्रीज होगी। इट मींस कि आफ्टर अ मंथ अगर आपकी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी नहीं है तो 1/4 ऑफ द पीपल विल फॉरगेट अबाउट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस फैक्टर इज बेसिकली the forgetting factor, the rate of forgetting that product in the consumers. I hope you get it. Now this differential equation is basically 1/4 A plus 25,000.
It is a linear first order differential equation. We can write it in this form: dA by dt plus 1 by 4 A is equal to 25,000. Okay. Now we can solve this differential equation by finding the integrating factor, which is 1 by 4 dt, and it is e raised power t by 4. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, तो I hope you know it. It becomes a into e raised power t by 4, and the right hand side को आप integrate कर देंगे, इधर भी integrate with respect to t 25,000 dt. So आपके पास क्या आ जाएगा? A into e raised power t by 4 is equal to 25,000 t plus a constant of integration, and then you divide e power t by 4 on the other side, you get a of t is equal to 25,000. Sorry, यहाँ पे sorry. You have to multiply e raised by t by 4 here also. तो यहाँ पे e raised by t by 4 भी आएगा dt, और यहाँ पे आपके पास 25,000 into e raised by t by 4 divided by 1 by 4 plus c. ये इंटीग्रेशन होगी, ठीक है. So it becomes यहाँ पे क्या आ जाएगा? It is 100,000 into e raised power t by 4. T by 4 cancel हो जाएगा, and you get this one plus c times e raised power negative t by 4. ये आ जाएगा, ठीक है. Now initially पहले मंथ के शुरू में कितनी at time 0 आपकी अवेयरनेस कितनी होगी? Initial condition, which should be basically appropriate here. It should be a of 0 is equal to 0, because when time is 0, nobody is aware of that product. We put here an initial condition a of 0 is equal to 0. Now using this initial condition, we can find the value of c. So it becomes 0 is equal to 100,000 plus c into e raised power 0, which is 1. So c is negative 100,000. So आपके पास जो solution है, it would be a of t is equal to 100,000 minus 100,000 into this. So आप 100,000 common ले लें. So you get 1 minus e raised power negative t by 4. So this is your solution. This one. Now this function will tell you कि after 1 year कितने लोग जो हैं वो they would be aware of that new product. Yeah, you can calculate at any time, after 1 month, after 2 months, and so on. Now, if we put t is equal to 12, क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या था, आफ्टर 1 ईयर हमने कैलकुलेट करना है कि कितने लोग जो हैं अवेयर हैं इस प्रोडक्ट से. आफ्टर 1 ईयर मींस व्हाट? 12 मंथ्स. ठीक है. सो आप जो सोल्यूशन है उसमें t की वैल्यू 12 पुट कर दें, तो आपके पास 100,000 times 1 minus e raised power negative 12 by 4. After solving it, you get the required number of consumers or people who would be aware of this product. शायद मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हो. No, you can do it yourself. कैलकुलेटर पे करके तो मुझे बताएं ये कितने लोग बनते हैं. Some of you may calculate this and tell me what would be the amount. For there is a question in the chat window. For the real life models, do we predict what our constants will be, or is it calculated after some time of advertisement? Both things are possible.
ठीक है, if you know the pattern of the consumers with respect to those constants कि कितनी अवेयरनेस डिक्रीज होती है एक मंथ अगर आप एडवर्टाइजमेंट रोक दें तो अवेयरनेस कितनी डिक्रीज होती है, तो उस हिसाब से यू कैन कैलकुलेट लेमडा एंड एज वेल अगर आप $5 और $1 स्पेंड करते हैं तो कितने लोग उस प्रोडक्ट से अवेयर होंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे B25 है. व्हाट डज इट मीन कि अगर इफ यू स्पेंड $1 25 people will be aware of this product. And 1/4, what does this describes here? जितने भी लोग हैं अगर आप एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं तो 1/4 of the people would forget about this product. Yes, there is a question in the chat window. What is this? What is this? Sana 95021.3. Okay, that is the amount you're telling me. Okay, 95201. So 95201 people will be aware of this product after 12 months. ठीक है. Now you can see that अगर हम देखते हैं कि हमारा solution जो है वो 100,000. सर मैंने गलत किया था, वो 95021 है. 021 चलें, it doesn't matter. ठीक है, it is -3/4. अब देखिए एज अ लिमिटिंग केस, अगर हम लिमिटिंग केस देखें इसका, लिमिटिंग केस मींस t goes to infinity. Means when time goes to infinity. तो लिमिटिंग केस क्या होगा कि अगर आप दोनों साइड पे t लिमिट अप्लाई कर दें, t goes to infinity, तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला फैक्टर, this will be 0 and we get this thing a of t, where t goes to infinity. But this is not realistic कि आप ये कह दें कि when t goes to infinity तो आपके 100,000 people would be aware of this product. Similarly, you can modify this problem in some for some different conditions. And I have included another example in my notes. You can imagine that if that company in the second year or even some other company introduces some new product and they decided to spend this money, $12,000 in first 6 months. Okay? In the remaining 6 months, they spend nothing. In that case, Q of T would be what? 2,000 when T is greater than 0, less than or equal to 6 months, and 0 for 6 less than T less than or equal to 12. Okay? In that case, the right-hand side function Q of T will be a piecewise function. Okay? What does this mean here? That company spends $12,000 evenly during the first 6 months, and the other part during this from 6 to 12 months, they spend nothing on that, on the advertising of that new product. Okay? So in that case, the problem will be changed and you have to solve it accordingly by using this piecewise function. Then you can basically know how many people would be aware of this new product after 1 year. I hope you can do it. If not, you can see in my notes, I have already given the solution of this problem. Now, if you have any questions regarding these kind of differential equations, you can ask me.
you can see the graph of this solution in my notes as well. Again, if we want to plot this solution, you can see that here 0 to 50, या आप कह सकते हैं 50,000. If we scale it up in this way, 100,000 people, and time is one first month. थोड़ा सा इसको अगर आपके पास ये फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, fourth month, fifth, sixth, seventh, eighth, 9, 10, 11, and 12. So this is time, and this is your A of t variable. Then you can see that the curve, again, maximum limit kitni hai? The people would be aware of this product is 100,000. तो यहाँ पे आपके पास जो upper limit होगी इस कर्व की, यहाँ पे आपके पास ये होगी, ठीक है. तो 0 से स्टार्ट होगी ये कर्व, and that awareness of the people will start increasing, and it will reach up to maximum 100,000 people within this budget, $12,000. So maximum 100,000 people would be aware of that new product. So this will be the graph of this solution. I hope you get it. If you have any question, you can ask me. Sir, जी. it's जरूरी तो नहीं कि हम ये मॉडल एक नए प्रोडक्ट पे इम्प्लीमेंट करें. हो सकता है कि एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और उस पे भी तो हो सकते हैं ना इम्प्लीमेंट. In that case, the model, we have to include some other factors in the model, because if the product is not new, there are people who are already aware of that product. Okay? So we have to add these kind of factors in that model also. So that would be more difficult, I think. Okay? So we have to take care of those factors as well. अगर किसी already जो पुरानी product है, या आप assume करें कि people or consumer they have already forgot about that product, and they are and the company is starting from zero. So उसमें वो factor भी आ सकते हैं. Otherwise you have to assume कि जो आपकी product है उसमें आप assume कर रहे हैं कि जो consumers हैं they totally forgot about that product. ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे initial condition क्या use की थी? A of 0 is equal to 0. A of 0 is equal to 0. What does it mean? At time 0, the awareness, the people aware of this product is 0. So you have to adjust this initial condition if there are people who are already aware of this product. You have to adjust the model. Okay, I hope you get it. Any other question? If you don't have any question, I have some other models by using Newton law of cooling. I have already described you Newton law of cooling in the previous lectures. I hope you know it, and you can do yourself these kind of models which uses Newton law of cooling to model some daily life problems. Let me quickly review this, and then we shall move forward to discuss the RLC circuits, electrical circuits. So next, we'll discuss very quickly, because Newton law of cooling हमने पहले already हमने discuss कर लिया है, ठीक है. So इसमें आप देख लें Newton's law of cooling, or you can say heating or warming. You can say anything. Newton said that if T is temperature, of a body, this body could be at any time T, at time T.
Okay. For example, a cup of tea, a pie, एप्पल पाई केक है या कोई भी और आइसक्रीम है, ठीक है, कोई भी आपके पास बॉडी है, कोई भी आइटम है जिसका टेम्परेचर जो है उस सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या है, या ज्यादा है या कम है, ठीक है। अगर आप इफ यू हैव अ कप ऑफ कॉफी, तो उसका टेम्परेचर डेफिनेटली आपका जो रूम टेम्परेचर है उससे डिफरेंट होगा व्हेन यू pour that coffee in the cup after removing from some electric kettle or whatever. So the variation of the temperature or the decrease of the temperature of that coffee cup, that can be described by Newton law of cooling. Yeah, uh, otherwise कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एन आइसक्रीम इन योर हैंड, ठीक है, आइसक्रीम का टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर से बहुत ज्यादा क्या होगा, वो नीचे होगा। अगर आप कोई आइसक्रीम फ्रीजर से निकालते हैं, तो जो फ्रीजर का टेम्परेचर होता है नॉर्मली, हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसके फ्रीजर का टेम्परेचर नॉर्मली -18 डिग्री होता है। तो आप जब आइसक्रीम फ्रीजर से निकालते हैं तो -18 डिग्री टेम्परेचर है यू आर अज्यूमिंग, और अगर आपका जो रूम टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट टेम्परेचर है, वो 30 या 35 डिग्री है, तो डेफिनेटली आइसक्रीम का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी आफ्टर सम टाइम। So the variation of temperature in that body could be described by using Newton law of cooling. And the Newton law of cooling is what dT by dt is basically proportional to some lambda, and it is negative times T minus Tm, where Tm is what? Is the surrounding temperature, or you can say surrounding or environment temperature. And it is usually constant. We assume that this is the surrounding temperature is constant. अगर आपके रूम में कोई एसी या हीटर नहीं लगा हुआ, यू आर assuming के टेम्परेचर ऑफ दैट रूम इज अ कांस्टेंट। लेकिन अगर कोई हीटिंग और कूलिंग सोर्स लगा हुआ है, जैसे कि इस रूम में एसी लगे हुए हैं, तो आपका टेम्परेचर जो है रूम का वो डेफिनेटली with the passage of time it will change. In that case, this Tm would not be a constant. Now, this is Newton law of cooling, which describes that the temperature of a body is proportional to the rate of change of temperature of a body is proportional to the difference between the temperature at certain time t, at some current time t, minus the temperature of the surrounding or the temperature of environment where that product is basically present. I hope you get it. If you have any question, you can ask me. Now let's have only one example which we can discuss here. And the rest of the examples I have included in my notes. You can see them here in my notes, which I have already uploaded, I think, on LMS. Okay. Let me do some good example. Okay. Here on page 12 hai, you take an ice cream out of the freezer kept at -18 degrees centigrade. An ice cream example. ठीक है, आइसक्रीम एग्जाम्पल है। You took an ice cream out of some freezer at your home, okay, and the temperature of that freezer is -18 degree, -18 degree, and outside it is 32 degree. Outside it is 32 degree, means room temperature is 32 degree. So Tm should be what? 32 degree centigrade. When you took out of that freezer the ice cream, it means the initial temperature of that ice cream is what? -18 degrees centigrade.
Okay. So what you have to do, after 1 minute, the ice cream has warmed to -8 degrees. After 1 minute, sorry, 1 minute, that ice cream has warmed up to -8 degrees. Means when T is 1, the temperature is what? -8 degree. ठीक है, तो यहां से आपके पास टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. जब आपने आइसक्रीम फ्रीजर से निकाली तो -18 डिग्री थी, उसका टेम्परेचर था. आफ्टर 1 मिनट, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है 32 है, काफी गर्मी है, तो आइसक्रीम बहुत जल्दी मेल्ट होगी. तो उसका टेम्परेचर कहाँ पे पहुंच गया आइसक्रीम का? -8 डिग्री. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू compute or determine in this problem, what is the temperature of ice cream after 5 minutes? So we need to calculate what is the temperature after 5 minutes. ठीक है, तो 5 मिनट के बाद उस आइसक्रीम का टेम्परेचर क्या होगा? ठीक है, we have to find it. Now, no rate has been given here, rate of change of the temperature, which is basically the lambda in that model. What is this? It is the rate of change of temperature, basically. Rate of change. Okay. So here the lambda is unknown. हमारे पास lambda भी नहीं है. We have to compute that lambda as well. If we want to use that model, Newton law of cooling, to find the temperature of ice cream after 5 minutes. Okay. So we are given these two three. This information, this temperature at 0 and temperature at after 1 minute, T at 1. So the model which we are going to use is the same one, negative. अच्छा, यहाँ पे negative क्यों है? Because the temperature is decreasing or increasing. यहाँ पे negative होगा या positive होगा? Anyone? Can you tell me कि यहाँ पे temperature decrease होगा या increase होगा? यहाँ पे negative होगा या positive होगा? चलें देखते हैं आगे. यहाँ पे वैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज तो नहीं हो रहा. तो दिस शुड बी पॉजिटिव. बहरहाल देखते हैं आगे चल के कि इसकी वैल्यू क्या आती है. अब दिस इज अननोन. टीएम हमारे पास है, dt आपके पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव. दिस टी माइनस एनवायरमेंट का टेम्परेचर क्या है? 32 डिग्री है. ठीक है. अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? दिस इज सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो t माइनस 32. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव होना चाहिए. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. डिक्रीज होगा तो नेगेटिव होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा. सो यू हैव टू पुट हियर अ पॉजिटिव साइन. तो यहाँ पे dt आ जाएगा और यहाँ पे स्मॉल dt इंटू लैम्डा. ठीक है, तो आपके पास यहाँ से फिर नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस 32 इज इक्वल टू lambda t plus c. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए? लॉग उधर जाएगा तो ये t minus 32 is equal to exponential of lambda t plus c. Then you can write exponential of lambda t into exponential of c. आप इसको कोई और c नॉट कह दें, कोई कांस्टेंट. ठीक है, and then you can write finally the solution in this way. T of t is equal to 32 plus c naught into e raised power plus c naught into e raised power lambda t. Okay. This is the solution of that differential equation with unknown lambda.
Now we know that T at 0 is what? It is surrounding temperature, sorry, initial temperature is negative 18. Okay. So by using this initial condition, negative 18 is equal to 32 plus C naught e raised power 0. So यहाँ पे C naught की वैल्यू क्या आ जाएगी? This will go there and it becomes negative. So C naught की वैल्यू क्या आ जाएगी? 32 minus 18 is negative 50. So the solution becomes now T of T is equal to 32 plus minus, in fact, minus 50 e raised power lambda T. अब हमें C naught की वैल्यू पता चल गई. Now we have to compute this lambda. We are going to use the other condition given, which was after 1 minute, T at 1 is what? It is negative 8 degree. Now we will use this condition to find the lambda. ठीक है. अच्छा, lambda in order to find it, what we use this condition, which is 32 minus 50 e raised power lambda into t की वैल्यू क्या है? 1. So we put here t is equal to 1. Now in this equation, the only unknown is lambda. We can easily find it. We take it on the other side. 40 हो जाएगा यहाँ पे. Negative 40 is equal to negative 50 e raised power lambda. और negative negative cancel. आपके पास 4 by 5 is equal to e raised power lambda. आप natural log दोनों sides पे ले लें तो lambda की value क्या आ जाएगी? Natural log of 4 by 5. So this is the value of lambda in this problem. Now by inserting lambda here, we get finally the solution with all the parameters known. We have been natural log of 4 by 5 into T. Now we need to calculate the temperature of that ice cream after 5 minutes. So क्या होगा? आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं मजीद. देखें यहाँ पे t अगर आप पहले लिख लें, यहाँ पे t आप लिख लें तो t log की इधर पावर में जाएगा तो ये 32 minus 50 e log कैंसिल हो जाएंगे. 50 into 4 by 5 पावर t आ जाएगी. ठीक है. So this is your solution. Now we need to calculate the temperature of that ice cream after 5 minutes. T is equal to 5 and 32 minus 50 times 4 by 5 power 5. After solving it, what do we get? 15.6 degree. So 15.6 degree centigrade ice cream का temperature होगा after 5 minutes. I hope you get it. If you have any question, you can ask me. 15.6 डिग्री टेम्परेचर होगा आइसक्रीम पे तो काफी सारी आइसक्रीम मेल्ट हो चुकी होगी और आपके कपड़े गंदे हो चुके होंगे, हाथ भी गंदे हो चुके होंगे, इसलिए उसको खाने का कोई फायदा नहीं. जी, d by dt is the rate of change of the temperature of that body. That definitely it is true. Lambda is basically rate of change per unit time, okay, which you should know. Okay. Lambda is constant. ठीक है. Lambda जो है वो constant है कि lambda यहाँ पे देखें ये है ना, तो rate मतलब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट अगर आप कहें उसको रेट को तो ये कांस्टेंट रेट है जिससे टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है. ठीक है. लेकिन टी जो है वो उसमें टाइम वेरिएबल है. यू कैन बेसिकली d by dt is you can say overall rate of change of that body with respect to time. ठीक है. टाइम कुछ भी हो सकता है उसमें. Any question? Any other question? I hope you can do these kind of problems now. I have included a couple of questions in as exercises in my notes. You have to
look at those questions and try to solve them. अगर कोई problem होता है तो you can ask me any question in the next lecture maybe, or you can send me an email. ठीक है. Now, the next thing which we are going to discuss is the applications of first order differential equations in electric circuits. Okay. Let me. Lambda, which we use in the Newton law of cooling, is basically it depends on the material of that body as well. If we look at the lambda physically, then lambda is basically dependent on the heat capacity of that material and area of that material. ठीक है. अगर आप देखें कि कप ऑफ कॉफी है, ठीक है, अगर आप उसी कप ऑफ कॉफी को एक बड़े कंटेनर में डाल दें, मींस उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए, तो उसका टेम्परेचर का जो डिक्रीज होगी वो ज्यादा तेजी से होगी. ठीक है. समटाइम्स आपने देखा होगा कि होटल्स पे चाय जब लेते हैं तो उसके साथ प्लेट होती है. कुछ लोग जो है वो चाय प्लेट में डाल के पीते हैं. क्यों प्लेट में डालते हैं? क्योंकि वो जल्दी ठंडी हो जाती है. सो दैट लैम्डा डिपेंड्स ऑन बेसिकली डिफरेंट थिंग्स, हीट कैपेसिटी ऑफ दैट मटेरियल. अब पानी जो है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा. अगर कोई मेटल है उसका रेट ऑफ चेंज देखना है टेम्परेचर को, तो मेटल जो है वो देर से ठंडी होगी. ठीक है. तो हीट कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इज डिफरेंट, and the rate of change of temperature also depend on the surface area of that body as well. छोटी अगर जैसे मैंने आपको कहा कि अगर चाय का कप है तो वो उसको ठंडा होने में थोड़ी सी देर लगेगी एज कंपेयर्ड कि आप चाय या कॉफी जो है वो किसी बड़े कंटेनर में या किसी बड़ी प्लेट में डाल दें तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी. So lambda is basically is a constant of proportionality here, but physically it depends on many things. I hope you get it now. Now we are going to discuss the RLC electric circuits. We can use first and second order differential equations to model the flow of a charge or flow of a current in electric circuits. RLC means, what does it mean? R means resistance. L means inductance. And C means capacitance. Capacitance, I think. Let me check it. Capacitors, resistors, and inductors. These are the sorry, parts in some electric circuit. For example, if you have a circuit of this kind, यहाँ पे आपके पास एक maybe resistor है. तो resistor को हम I hope कि जो आपके जो SSC के बच्चे हैं उनको सर्किट्स के बारे में थोड़ा सा पता होगा. सो जो रेजिस्टर का जो सिंबल है इन ए सर्किट, रेजिस्टर को हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है. और कैपेसिटर को या इंडक्टेंस को हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है. और जो इंडक्टर होता है उसको हम इस तरह सर्किट डायग्राम में इस तरह डिस्क्राइब करते हैं या इस तरह डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. So this is what, this is your potential drop. This is, you can say V. This could be, this is also called EMF or electromotive force. This is basically a kind of battery or generator. ठीक है, बैटरी या जनरेटर. यहाँ पे एक बैटरी है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है. तो जब इफ यू हैव अ क्लोज्ड सर्किट, तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है
उससे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर जनरेटर है या कोई भी बैटरी है, अगर वो बैटरी फिनिश खत्म नहीं हो चुकी, नई नई बैटरी आपने लगाई है, तो उसमें डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें दोनों एंड्स पे। तो पॉजिटिव यहाँ से फ्लो करना शुरू हो जाएगा चार्ज, ठीक है। जब चार्ज फ्लो होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम डिनोट करें Q को चार्ज से, ठीक है, इन एनी सर्किट, I इज बेसिकली करंट, ठीक है। और R इज, मैंने आपको वहां पे पहले बता दिया व्हाट इज R। R इज द रेजिस्टेंस, और ये क्या है, दिस इज बेसिकली अ रेजिस्टर, ठीक है। एंड दिस इज योर इंडक्टर। These are the parts, or you can say components, used in some electric circuit. Inductor, and this is your conductor. Okay. You can see more detail about these components in my notes as well as in some book of electric circuits. I don't have much time to explain about these components. Still, if you have any question, you can ask me. The resistor obeys the Ohm's law. ठीक है, कोई भी resistor जो है वो ओहम लॉ को, resistor obeys Ohm's law. Ohm law क्या है जी? Ohm law is basically that the यहाँ पे Ohm law states that the voltage across a resistor, voltage across, देखिए यहाँ पे भी वोल्टेज है, जब यहाँ से करंट पास होगी, ठीक है, या चार्ज फ्लो करेगा, तो रेजिस्टर क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा टू फ्लो इट थ्रू दिस रेजिस्टर। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। इस पोटेंशियल को हम कह देते हैं वी आर। इस तरह इंडक्टर जो है वो भी अपोज करता है करंट फ्लो को। यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप मींस यहाँ पे अगर यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है तो यहाँ पे फिर पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे जब ये करंट पास करेगी तो यहाँ पे कम होगा, एंड सो ऑन। तो इंडक्टर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है यहाँ पे, उसको हम वी सी कहते हैं, ठीक, वी सी नहीं, वी इसको वी एल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एल को हम इंडक्टेंस कह रहे हैं, तो ये दिस इज डिनोटेड बाय वी एल। इसी तरह यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो कंडक्टर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको वी सी कहते हैं हम, ठीक है। तो रेजिस्टर जो है इट ओबेज द ओहम्स लॉ। ओहम लॉ क्या है, वी आर पोटेंशियल ड्रॉप across the resistor is proportional, directly proportional to the current flowing through that resistor. अगर हम इसको प्रोपोर्शनल कहें कि ये करंट के इक्वल है, अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाएं तो वी आर इज बेसिकली आर टाइम आई, वेयर आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन मैथमेटिक्स। बट अगर आप सर्किट थ्योरी में देखें तो आर इज कॉल्ड बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफ दैट resistor, and resistance also depends on the material by which that resistor is made. Similarly, जो inductor है that also obeys Faraday's law, ठीक है। तो inductor now, what is this Faraday's law? It states that the potential drop across the inductor is proportional to the rate of change of current. Means D, it is proportional to di by dt, ठीक है, where I is the current passing through that circuit, that inductor. So अगर हम constant of proportionality को हटाएं तो we put a constant here. VL is basically what? L times, where L is the constant of proportionality here in mathematics, and in electric circuit theory, L is what? It is the inductance through of that inductor. So VL is this. Similarly, the conductance
the potential drop in conductor, it obeys the law. V C is proportional to, you can say, yeah, equal to Q1 over C, where C is basically the conductance of that material. I hope you get it. If you have any further question, you can ask me. This is what I wanted to explain you. Now, if you have any question, you can ask me. Now we are going to discuss Kirchhoff's first and second law. Kirchhoff's first and second law, we are not going to use here Kirchhoff's first law, which states that, आपको मैं बता देता हूँ in short, Kirchhoff's first law for the closed circuits. ये सारे law जो हैं ये closed circuits के लिए हैं, first and second law. ठीक है, Kirchhoff's first law states that कि आपके पास सर्किट्स है, सर्किट है अगर जैसे वो, ठीक है, तो ये तो वेरी सिंपल सर्किट है, ठीक है, क्लोज सर्किट है विद सिंगल लूप है इसमें, ठीक है। अगर मल्टीपल लूप्स के सर्किट्स हैं तो किसी भी एक नोड पे जो इनफ्लो ऑफ द करंट होता है, करंट इनफ्लो आप कह सकते हैं या एंटरिंग कहते हैं, ठीक है, करंट एंटरिंग किसी भी नोड पे प्लस current which is leaving that node is always zero. This is what Kirchhoff's law states. कि किसी भी सर्किट में किसी नोड पे, ठीक है, किसी नोड पे जितने भी करंट्स इंटर हो रही हैं और जितनी लीव कर रही हैं, उन सारों का सम क्या होना चाहिए? जीरो. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ नोड इन पर्टिकुलर सर्किट. यहाँ से करंट आ रही है, यहाँ से करंट आ रही है, ठीक है, और यहाँ से करंट इज लीविंग, यहाँ से भी लीव कर रही है, ठीक है, तो यहाँ से करंट इज कमिंग इन दैट नोड और यहाँ से लीव कर रही है. लीव कर रही है मीन्स तीन डायरेक्शन में लीव भी कर सकती है. तो यहाँ पे अगर हम इसको I1 कह दें, इसको I2 कह दें, इसको I3 कह दें, इसको I4 कह दें और इसको I5 कह दें, तो आपके पास I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus I5, this is zero. ठीक है. So sum of all currents entering into some particular node and leaving that node is zero. ठीक है. This is what Kirchhoff's first law states. Now the second law, Kirchhoff's second law is what? The second law states that here we will use the Kirchhoff's second law, not the first law. Okay. Kirchhoff's second law is also known as Kirchhoff's voltage law. Okay. And it states that sum of all voltages around a closed loop in any circuit must be equal to zero. What does it mean? देखिए, आपके पास ये क्लोज सर्किट है, ठीक है, इसमें सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस, ठीक है, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस, यहाँ पे ये वोल्टेज जो है ये जनरेट हो रही है, ठीक है, बैटरी उसको वोल्टेज को जनरेट कर रही है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जनरेट कर रही है. तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो पॉजिटिव होगी क्योंकि वोल्टेज जनरेट हो रही है. यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, ये हमेशा ये वाली वोल्टेज क्या होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है. और ये वाली वोल्टेज यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ड्रॉप हो रहा है या वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव होगी, ये भी नेगेटिव होगी. इट मींस V प्लस माइनस VR प्लस माइनस VL प्लस माइनस VC. This all should be zero, or you can say that V is equal to VR plus VL plus VC. ठीक है. It means कि आपके जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं वो वोल्टेज गेन या वोल्टेज जनरेटर के इक्वल होने चाहिए. सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स
ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, ये वोल्टेज जनरेट हो रहा है, इन सब का सम क्या होना चाहिए? 0। दिस इज व्हाट किरचॉफ सेकंड लॉ स्टेट्स। अब हमने यहाँ पे कहा था कि जो रेजिस्टर है वो ओबे करता है आर आई को, विच इज ओहम लॉ, और ये फैराडे लॉ को डिस्क्राइब करता है, दिस थिंग। और कंडक्टर 1/C(q) इस लॉ को ओबे करता है। अगर हम ये वाली चीजें यहाँ पे पुट करें, v को आप v कह दे, ठीक है, वी आर इज व्हाट, आर आई प्लस वी एल इज व्हाट, एल डी आई बाई डी टी, प्लस वी सी को आप कह दें 1/C(q), ठीक है। And by definition of electric current, we can say that definition of electric current, that I is basically the rate of change of Q with respect to time. What does it mean? The current is the rate of change of charge, where Q is the charge with respect to time. जब किसी भी सर्किट में चार्ज फ्लो करता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट चार्ज इज बेसिकली कॉल्ड द करंट, ठीक है। सो आई को हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। अगर यहाँ पे v को कांस्टेंट अस्यूम करें कि कांस्टेंट यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो कांस्टेंटली यहाँ से जनरेट हो रही है, ठीक है, उसमें कोई ड्रॉप नहीं है। ये जनरेटर है, जनरेटर जो है यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या पोटेंशियल यहाँ पे आप कह सकते हो वोल्टेज ड्रॉप, नहीं, वोल्टेज जनरेट करता है। तो यहाँ से चार्ज फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है तो आपके पास करंट जनरेट होती है, ठीक है। सो आई को अगर हम डी क्यू बाई डी टी कहें, यहाँ पे पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इट इज बेसिकली आर आई की जगह डी क्यू बाई डी टी प्लस एल डी बाई डी टी, आई की जगह अगेन डी क्यू बाई डी टी प्लस आई सी क्यू इज इक्वल टू वी, ठीक है। सो आफ्टर सॉल्विंग इट, व्हाट डू यू गेट हियर? यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा क्यू का, तो यहाँ पे आप यू कैन राइट हियर डी स्केयर क्यू बाय डी टी स्केयर. So this is your second order differential equation in order to find the charge at any time t in that closed circuit. ठीक है, तो यहां से ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। v को यहाँ पे आप कांस्टेंट ले लें, ठीक है, तो आपके पास ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास बन गई है, ठीक है। अगर आपको इनिशियल चार्ज का पता है कि जब आप जनरेटर अटैच कर रहे हैं तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे आप इनिशियल कंडीशन ले सकते हैं, q at t is equal to 0 is some constant, you can say q naught, and then you need two initial conditions in order to solve the second order differential equation. आपको चार्ज भी चाहिए और चार्ज का रेट ऑफ चेंज भी चाहिए, मींस q dash at 0 आप इसको q1 कह दें। अगर आपके पास ये दो इनिशियल कंडीशन है, then you can solve this second order differential equation and you can find the charge in that circuit at any time t. So this gives us a second order differential equation, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आपके पास L 0 है, मींस आपका जो सर्किट है इसमें, आपके सर्किट में इंडक्टर नहीं है, ठीक है, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी? डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी जो बनी है वो क्या है? इट इज आर डी क्यू बाई डी टी, आर डी क्यू बाई डी टी प्लस एल डी स्केयर क्यू बाई डी टी स्केयर प्लस 1 by c q is equal to v, where v is, you can say v naught, just to describe, specify that v is constant. अगर आपके पास ये वाली टर्म नहीं है, अगर आपके पास इस सर्किट में इस सर्किट में इंडक्टर नहीं है, ठीक है, देयर इज नो इंडक्टर हियर, ये सीधी एक लाइन जा रही है, इंडक्टर नहीं है, तो यहाँ पे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी?
0 हो जाएगी, एंड यू गेट ओनली आर डी क्यू बाई डी टी प्लस 1/c क्यू इज इक्वल टू वी नॉट। ठीक है, इसको, इस तरह के सर्किट को जिसमें इंडक्टर नहीं होता, इसको हम आरसी सर्किट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड आरसी सर्किट। ठीक है, अगर आरसी सर्किट है सिर्फ, वो हमने शुरू में क्या स्टार्ट किया था, आर एल सी। अगर एल 0 हो गया तो सिर्फ आरसी सेक्टर हो जाएगा, आरसी सर्किट हो जाएगा। तो ये आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ये स्पेशल केस है बेसिकली। सेकेंड केस में अगर आपके पास यहां पे रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो यहां पे आपके पास सीधी लाइन होगी, एक रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 होगी, तो आपके पास सिर्फ ये दो टर्म्स आ जाएंगी, एल डी स्क्र क्यू बाय डी टी स्क्र प्लस 1/c q is equal to 0 v0, and this is called, अगर आपके पास रेजिस्टर नहीं है तो ये LC सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तीसरे केस में क्या होगा, अगर आपके पास कंडक्टर नहीं है इस सर्किट में, अगर आपके पास कंडक्टर नहीं है तो यहाँ पे ये वाली सिंबल नहीं होगा, यहाँ पे एक सीधी लाइन होगी, तो आपके पास यू विल गेट RL सर्किट। ठीक है, ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू वी, इज इक्वल टू वी। अब इसमें हमने क्या कहा था कि डी क्यू बाई डी टी जो है वो आई है, तो अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ आई लिखें तो दिस कैन बी रिटन एज डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट। ठीक है, अगर आई को हम डी क्यू बाई डी टी को आई लिख दें तो ये आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, जिससे आप यू कैन कंप्यूट द करंट एट एनी टाइम टी। ठीक है, सो दिस इज योर बेसिकली कॉल्ड RL सर्किट, जिसमें आपके पास कंडक्टर नहीं होता। सो दीज आर थ्री केसेस, स्पेशल केसेस ऑफ RLC सर्किट। I hope you get it. If you have any question, you can ask me. In the next lecture, we shall do a couple of examples of these kind of models of second order and first order differential equations, which can help us to model the electric circuits in a closed loop. ठीक है, ये तो एक सिंगल लूप था, अगर इसमें पैरेलल मोर देन वन लूप्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक से ज्यादा लूप्स आएंगे तो आपके पास क्या होगा, फिर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस जनरेट होगा, क्योंकि उसमें दो टाइप्स की या दो करंट्स फ्लो होंगे डिफरेंट, या दो चार्ज जो हैं डिफरेंट यूज होंगे, तो उसमें आपके पास जो किरचॉफ सेकंड लॉ है वो दो दफा यूज होगा, तो आपके पास एक सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। अगर आपके पास दो लूप्स हैं एक ही क्लोज सर्किट, ठीक है, अगर तीन है तो सिस्टम ऑफ थ्री डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इट डिपेंड्स हाउ मेनी क्लोज्ड लूप्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर सर्किट। ठीक है, इस सर्किट में एक ही क्लोज लूप है, यहाँ पे करंट इस तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है, यहाँ पे इस तरफ फ्लो कर रही है, यहाँ पे इस तरफ फ्लो कर रही है, एंड देन दिस गो बैक। एक ही लूप है, क्लोज लूप। अगर इसमें हम एक और लूप ऐड कर दें, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पे करंट इधर जा रही है और यहाँ से सीधी भी जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे में भी कोई और आपके पास रेजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पे कोई और आपके पास इंडक्टर है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इस तरफ करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पे भी, तो आपके पास ये दो लूप्स हो जाएंगे। ठीक है, दो लूप्स हैं तो आपके पास दो डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगे, तो which gives you system of differential equations, and by solving that system of differential equation we can find the charge or current flowing through each loop. तो इस तरह की एक दो एग्जांपल्स में आपको I'll show you, we will discuss in the next lecture. Now if you have any question you can ask me.